damping factor. During the settling process of a gyro compass, during the settling process of a gyro compass, मोहित क्या कर रहे हो इधर से उधर? बोल रहा नोट्स लिखना है. During the settling process of a gyro compass, टेबल से मूव कर रहा था सर. Okay. Repeating again. During the settling process of a gyro compass, its amplitude of oscillations, goes on reducing till it becomes zero as the compass finally settles down. Goes on reducing till it becomes zero as the compass finally settles down. Next paragraph. At any instant, the ratio of the last amplitude to the one just before can be calculated. Full stop. This ratio is called damping factor. This ratio is called damping factor. Next paragraph. Sorry. The ratio of the last two amplitudes. Traced by the gyro compass. Sir, can you repeat, sir? Based by what? Okay. The ratio of the last two amplitudes traced by a gyro compass तो वर्ड समझ में नहीं आ रहा सर. लास्ट टू एम्पलीट्यूड बाय द gyro compass. traced, TRACED. Last two amplitudes traced by a gyro compass during the settling process is called damping factor. ये डेफिनेशन हो गया एक तरीके से. Full stop. Continue writing. Let
A, capital A, comma B, that is capital B, and C. Let A, B, and C be the three consecutive reading. I'm repeating again. Let A, B, and C be the three consecutive readings. Consecutive readings during the settling of gyro. During the settling of a gyro, comma, then नीचे लाइन में आइए. Let me go to the board so that I can write it on the board. Just one second. Okay. Then damping factor F is equal to C to B by B to A. The difference between three amplitudes A, B, and C, the difference between C and B, and the difference between B and A. Note it down? Yes, sir. Okay. We will write some more, but before that, let us understand what we said here, what you have written so far. We know that when a gyro compass is settling down, the amplitude goes on reducing like this and finally settles down here. So what we are saying, let A, B, and C be the three consecutive readings. That means if the gyro compass was here, the reading would be 0, 0, 0. When it is going here, it is easterly. When it is coming here, it is westerly. So it is going east, west, east, west, east, west, and finally settles down. So let this be the first reading, maximum easterly. This is the first reading. Then next consecutive reading is max westerly. On the second turn, it is going here and it is coming to this. That is, next one is this, max east again. So this point, this reading is A, this one is B, and this one is C. Let us give it a value. Let us say this one is 040 degrees. 0 से ईस्ट में जब शिफ्ट हुआ तो 40 डिग्री पे चला गया. When it is coming back during the setting process, when it is coming here, let us say it is 30 degrees, or not 30, basically 330 degrees. When it is coming in the next cycle at C, it is coming, let us say, to be 012 degrees.
So A is 40, B is 330, and C is 012. So the damping factor is the ratio between C to B is the ratio between reading between C to B. अच्छा सूख गया ये भी चलेगा कि नहीं? हाँ चल गया. C to B divided by B to A. So this divided by this is the damping factor. For example, जो अभी एग्जाम्पल आपके सामने उससे डैम्पिंग फैक्टर कैलकुलेट करके बताइए. Here is the example 40, सर बोर्ड के 330. नीचे का दिख नहीं रहा है सर, ऊपर का ही तो सिर्फ दिख ऐसा रहा है. बोलिए, आप बोलिए, आप दिखा? हाँ सर. ओके. So So 0.92, 924. 924. That's the damping Damping factor. ठीक है. That means 330 से 012 गए तो कितना आ गया टोटल? 342. 342 नहीं, 330 में यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 12. That means 30 plus 12, 42. 42 divided by 70. 30 इधर, 40 इधर. 0.6. Yes, that's it. 0.6 is the damping factor, not 0.992 or something that you have calculated. We said the difference between C to B. C is here, B is here. So what is the difference between the two? Sir, 3C आपका 12 degree east 42. है and भाई साहब यहाँ से यहाँ 30 डिग्रीज है. सर वो 30 है, 330 है. 330 है तो 330 में 360 जाओगे तो कितना होगा? 000 पे आओगे तो कितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच में? ओके ओके ठीक है, मैं 0 ले रहा हूँ. और यहाँ से यहाँ जो गए 12 डिग्रीज है यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 42. 42. यहाँ पे ये 30 डिग्रीज है, यहाँ पे 40 डिग्रीज है, टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ? सही ना? तो damping factor will be 42 divided by 70. बढ़िया, ठीक ठाक. अरे शंखनाद हो रहा है. Are we good here? Yes, sir. Okay. Yes sir. Now continue writing. Continue writing. So damping percentage is equal to 1 by F minus, 1 minus F into 100. There F is the damping factor. Finished? Yes sir. Okay. So let us think
that the gyro is settling down. This H for horizon, M for meridian. It is settling down. So we have got, let us say, A, we have got B, we have got C, or we can say we have A, we have B, we have C, and at X point it is settling down. Now settling may be a little bit here, maybe here, wherever it is. Let us say it is settling down at X. So the damping factor due to which it was reducing constantly, the same ratio will continue in the same manner like C to B by B to A will be approximately equal to the one before. That means X to C, no, almost equal to X to C by C to B. Since the ratio is same, damping factor is same, continuing in the same manner, हमने बात किया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव और तीन कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स का रेशियो इस तरीके से होता है C to B, B to A is the damping factor. Same damping factor will be when it is settling down. So let us say what we have said कि A, B, C के बाद ये H पे सेटल हो रहा है. So this will be approximately equal. Now, if we use the damping factor for calculation, we can calculate where is it going to settle down by using some of these formula. Theoretically, we can find out where it is going to settle. The gyro compass is in the process of settling. It is not settled, but तीन रीडिंग अगर हम लेते हैं, डैम्पिंग फैक्टर निकालते हैं, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहां पे जाके सेटल होगा. Theoretically हम लोग पता कर सकते हैं कि where is it going to settle, and that settling position is called TSP, theoretical settling position. पकड़ में आया जो हमने कहा या साइड से निकल गया? आ गया सर. और सब बाकी लोग? आगे सर. Okay. Yes, sir, clear. Okay, good. That means what we have just said, I'm just repeating for the benefit of the class, that if we have A, B, C और उसके बेसिस पे अगर मान के चलें कि X पे सेटल हो रहा है, तो हम X का पोजीशन निकाल सकते हैं बाय कैलकुलेशन. कैसे? उसी A, B, C के बेसिस पे we can finally find out where is it going to settle, which place it is going to settle, and that place what we will call theoretical settling point. very good, theoretical settling position. So continue writing. इसी चीज को हम लोग टेक्स्ट में लिखेंगे. In this case, नीचे लाइन में आइए और लिखिए डैम्पिंग फैक्टर F is equal to X to C by C to B. Remember, damping factor is a ratio of the last two extremes. So like we were saying, we have got readings A, B, C and X. X is the settling point. So इन तीनों के बीच का रेशियो और इन तीनों के बीच का रेशियो will be almost equal. What we are trying to say is that X to C
by C to B is going to be approximately equal to C to B by B to A. So write down damping factor is so and so. And this also, X to C by C to B will be approximately equal to this value. Here, X is the theoretical settling position. Finished? Yes. Okay. Next line. Next line. इसी के बाद the theoretical settling position within bracket TSP the theoretical settling position can be calculated mathematically. That X can be calculated mathematically. TSP can be calculated mathematically as this. सर नीचे बोर्ड पे लाइट सी पड़ रही है, दिख नहीं रहा नीचे वाला। नीचे वाला नहीं दिख रहा है। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिएगा। TSP इज इक्वल टू B प्लस माइनस। ओके, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी दिख रहा है कुछ थोड़ा? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके, सर नीचे प्लस है ना? हाँ प्लस C टू B प्लस B टू A, दोनों ये चीज एक ही है। C टू B इंटू B टू A डिवाइडेड बाय C टू B प्लस B टू A। ऊपर सर वो मल्टीप्लाई है ना? ऊपर में मल्टीप्लाइड है, नीचे में प्लस है। ओके सर।
All finished? Yes, sir. Yeah, okay. Following observations were made. नीचे लाइन में आ जाइए. First maximum easterly. डैश डाल के 040 degrees at 1433 hours. टाइम भी दिया हुआ है. सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, क्या ना कितना है? I'm repeating. Following observations were made. First maximum easterly dash 040 degree at 1433 hours. नेक्स्ट लाइन में उसी के नीचे फर्स्ट मैक्सिमम वेस्टर्ली डैश 350 degrees at 1519 hours. नेक्स्ट रीडिंग उसके नीचे सेकंड मैक्सिमम ईस्टर्ली सेकंड मैक्सिमम ईस्टर्ली इधर मैं भी जी तो मेरे से बोला कुछ नहीं. सेकंड मैक्सिमम ईस्टर्ली डैश 005 degrees at 1558 hours. Sir, at what time? 1558 1558 hours. नीचे लाइन में आइए. कैलकुलेट ए डैम्पिंग परसेंटेज. तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट ए डैम्पिंग परसेंटेज, बी पीरियड ऑफ कंपास, सी theoretical settling position. सर बी पार्ट क्या था? Period of compass. Period. Period. Time period of compass. So what do you think? You can attempt doing it? कोशिश करेंगे या बोर्ड पे करें हम लोग? यस सर. सर पीरियड ऑफ कंपास का टोटल टाइम होगा ना, जहाँ पे वो सेटल जितना टाइम लिया उसने सेटल होने के लिए. किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड. चाहे वो साउंड वेव्स हो या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या पानी में रिपल्स हो, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में, साइक्लिक मोशन में time taken to complete one cycle is called time period. Earth has got a rotational time period 24 hours, basically 23 hours or something. There is an annual time period which is 365 days roughly. Any oscillatory motion or cyclic motion, time taken to complete one cycle is called time period. ठीक है? ओके सर. हमने सेटलिंग प्रोसेस में देखा था ना कि जब ऑसिलेशंस होते हैं, एलिप्टिकल ऑसिलेशंस, तो कितने देर का टाइम पीरियड हमने बात किया था. नॉर्मली कितने देर के बीच में होता है टाइम पीरियड एक साइकिल?
करीब 1 to 2 hours क्या? समथिंग लाइक दैट, 80 to 120 मिनट्स हमने बात करी थी, करेक्ट? यस सर। तो वो 80 मिनट्स टू 120 मिनट्स क्या था? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, नाउ ट्राई डूइंग ऑल दिस। तीनों चीज का फॉर्मूला आपके पास है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, नाउ आंसर। सर डैम्पिंग परसेंटेज 70%। बल्ले बल्ले सर 70% आया सर डैम्पिंग को। बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले मैंने कहा, बल्ले बल्ले। 70% करेक्ट। आंसर पीरियड हो जाएगा 1 hour 25 minutes। यस, दैट इज आल्सो राइट, बल्ले बल्ले। 1 hour 25 minutes पीरियड, वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम टू वापस पुराने एक्सट्रीम पे। ईस्ट से वेस्ट में गया, वेस्ट से ईस्ट में आया, इस टाइम के बीच के टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे। 1 hour 25 minutes इज राइट। सर ये TSP 1 degree 32 मिनट है क्या सर? TSP is there will be two answers, 001.538 degrees and the other one 338.5 degrees. प्लस का ही निकाला था, माइनस का निकाला। ओके, तो प्लस वाला जो है 001 वो सही आंसर है, बट एनीवे आपको दिखाना दोनों वैल्यू है, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली वैल्यू, दोनों दिखाना है। उसमें एक को टिक कर देना है, 001.538 डिग्रीज वाले को। सर ओके पीरियड सर। ऑफ कंपास कितना है? ओके, सर पीरियड ऑफ कंपास का आंसर 1 hour 25 minutes, 85 minutes. ओके सर, थैंक यू। That you have to do from 1433. One cycle is taking, I mean पूरा साइकिल कंप्लीट होने में 1433 पे शुरू हुआ, 1558 पे खत्म हुआ। तो इस बीच का टाइम कितना है? 1558 minus 1433, that's the time period. Everyone good? TSP 001.5 and 338.5. करेक्ट, करेक्ट आंसर। दो आंसर आएंगे, मैंने जैसा कहा था, 001.538 डिग्रीज एंड 338.5 डिग्रीज। क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दोनों के रिजल्ट आएंगे ना, बी में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो दो रिजल्ट आएंगे। वन इज सपोज टू बी द राइट आंसर, इन दिस केस 001 इज द राइट आंसर। So with this, the type of questions which are asked in the examination are all complete. We have two more classes. एक अगली क्लास है 15 मिनट के बाद और दूसरा लास्ट क्लास है। तो we will practice some more of these questions और लास्ट क्लास में कुछ आंसर क्वेश्चन होगा हमारे तरफ से, आपके तरफ से, whatever you want to ask
If not, we'll continue practicing some more, looking at different type of questions. But concept wise हमने almost सारा कुछ discuss कर लिया है. ठीक है? Yes. Okay. So when we come back, we'll take a look at another question of the similar sort. इसी concept पे फिर और दूसरे regular वाले questions देखेंगे, damping error, streaming error, उनके ऊपर और कुछ questions करने की कोशिश करेंगे. We'll write down some more types of questions. All right, so take a break. I think 2-3 minutes early only, but it's okay. So we meet after 15 minutes, take a break, and we come back. Right? Okay, sir. Right. Okay. चलिए.